हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ फिर से मैं न्यू जनरेशन गेम से, जो मैंने एक्सेसरीज परचेज़ की है जो कि मैं यूज़ करूँगा मेरे PS3 को रिस्टोर करने के लिए। तो चलिए उसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पैकेज पूरा पैक्ड है एक तरह से मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो भी हो जाएगा और यूट्यूब का वीडियो भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं सब जगह से एकदम पूरा पैक है। मैंने अभी तक इसे नहीं खोला है। ये देख सकते हैं एक पैकेज में दो पैकेज हो गए। इस पर चिराग लिखा है मेरा नाम। दूसरा एक और पैकेट हो गया, इस पर भी चिराग लिखा हुआ है। आई होप कुछ टूटा नहीं हो। मुझे लग रहा है शायद इसमें मेरी PS3 की जो आगे की मैंने फेस प्लेट जो मेरे पास नहीं थी वो मंगाई थी मैंने, तो वो होनी चाहिए इसमें। जी हाँ गाइस, इसमें फेस प्लेट ही है।
जो ऊपर नीचे की फेस प्लेट थी ये वो है, और इसकी शायद जो पीछे वाली जो प्लेट थी हार्ड ड्राइव वाली वो उन्होंने, हाँ वो भी इसी में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें शायद होनी चाहिए हार्ड डिस्क, एक PS2 टू HDMI कन्वर्टर, और जो हार्ड डिस्क जो मुझे PS3 सुपर स्लिम में जो लगानी है उसकी कैडी। इन सब का रेट मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा आपको मुझे कितने में पड़े सब। बहुत ज़्यादा पैकिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा बबल रैप है। मेरा हाथ दुखने आ गया। आई होप जो भी चीज़ें हैं वो बस वो सही सलामत हो, बाकी कुछ नहीं। फाइनली मेन बॉक्स तक पहुंच चुके हैं हम। पैकिंग इन्होंने पहले से बहुत अच्छी कर दी है, ये मुझे बोलना पड़ेगा। ये रही हार्ड डिस्क की कैडी, और ये रही 300 कितने GB की है, ये 320 GB की। इसमें हार्ड ड्राइव पहले से फिट की हुई है। ये मुझे थोड़ी सी कैडी पुरानी लग रही है, क्या मालूम ओरिजिनल हो सकती है। पर इसमें एक वो चीज़ नहीं आई है, PS2 टू HDMI कन्वर्टर, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मुझे शायद कंप्लेन करनी पड़ेगी। सो गाइस, ये कंटिन्यूशन वीडियो है क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो आई नहीं थी, तो उन्होंने हाथों हाथ 2 दिन में मुझे ये वापस शिप किया, तो ये वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें एक तो PS2 HDMI कनेक्टर होना चाहिए जो कि AV टू HDMI सिग्नल प्रोवाइड करता है, और दूसरा जो हार्ड डिस्क की जो कैडी रहती है वो मुझे फैट मॉडल की आ गई थी गलती से। तो मैंने वीडियो तो बना ही लिया था, पर फिर भी उन्होंने वीडियो के बिना ही मुझे भेज दी। तो अब देखते हैं इसमें चीज़ें बरोबर है कि नहीं है। पैकिंग तो हमेशा सही रहती है इनकी। ये सब चीज़ें मेरे PS3 के रिस्टोरेशन के लिए, तो मैं एंड में बताऊंगा कि क्या क्या मैंने किया और कितना मुझे
PS3 को बनाने में वापस खर्चा आया एक रनिंग कंडीशन के लिए। PS2 टू HDMI कंट्रोलर तो आ गया यहाँ पे, इसको एक बार अनबॉक्स कर देते हैं। कैडी जो है वो मुझे थोड़ी पुरानी लग रही है, पर अगर ये काम कर जाए तो क्या ही दिक्कत है। बाकी मैं इसकी वीडियो जो बाकी जो कंटिन्यू रहेगी मैं बताता हूँ क्या मैंने क्या किया और क्या नहीं किया।